वेलकम टू साथी आईएएस। हमारी जो मैपिंग सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट वीडियो है इंडियन मैपिंग में ड्रेनेज एंड द वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया। ड्रेनेज और वाटरफॉल्स आर दोज टॉपिक्स। वाटरफॉल्स अभी तक बहुत ज्यादा नहीं न्यूज में रहता था, बट इस बार इन 2024 प्रीलिम्स अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. So I am providing you with a comprehensive list of the waterfalls across the country, where they are located, as well as the rivers on which they are located. But उसे समझने के लिए उसके पहले हमें इंडियन ड्रेनेज समझना पड़ेगा. Drainage is what? In your houses, what is drainage? The region where the excess water it flows, right? नाले वगैरह जो होते हैं उनको ड्रेनेज बोलते हैं, right? आपके वॉशरूम्स में ड्रेनेज सिस्टम्स रहते हैं. सो एक्सेस जो भी वाटर रहता है आपके घर में, आपके किचन में, आपके बाथरूम में, वो कहाँ से मूव करता है? नालों से. थ्रू सर्टेन नॉचेस इन द ग्राउंड दिस वाटर इट मूव्स आउट. वैसे ही बड़े स्केल पे जो नॉचेस होते हैं ग्राउंड में, जहां से एक्सेस पानी मूव करता है फ्रॉम ओवर द लैंड into finally the oceans, these are known as the rivers, streams, rivers, okay, and they make up the drainage system of the country. So excess water that is coming from rainfall, it enters the drainage system and it exits into the oceans or the lakes or any other water body, stagnant water body. इंडियन जो ड्रेनेज है उसकी अगर हम बात करें, इट इज डिवाइडेड वेरी ब्यूटिफुली इनटू टू पार्ट्स. One is the peninsular drainage, other is the Himalayan drainage. Himalayan drainage includes those rivers or those river systems that are originating from the Himalayas. So in the Himalayan river system, अगर हम Himalayan river system की बात करें, यहाँ पे हमारी तीन major river systems आते हैं. We have the Indus river system. Only a part of the Indus river system is within India. जो परसेंटेजेस हैं रिवर की लेंथ्स वगैरह है उस पर मैं नहीं जा रही है, आपने स्टैटिक में पढ़ लिया होगा, अभी मैपिंग की क्लास है. एक बस बेसिक आई एम प्रोवाइडिंग यू विद अ बैकग्राउंड. सो हिमालयन ड्रेनेज में वी हैव द इंडस रिवर सिस्टम, वी हैव द गैंजेटिक रिवर सिस्टम एंड वी हैव द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. सो मोस्ट ऑफ द रिवर्स, most of these tributaries of these rivers, they are coming from the Himalayas. Some tributaries are also coming from the peninsular region. So that brings us to the peninsular drainage of India. Peninsular drainage of India, that means the rivers that are originating from the Indian peninsula. These rivers, they can be divided into three types. One, the rivers that are flowing towards the north, like the Son river or the Chambal river, they are flowing north and entering into the rivers that are coming from Himalayas. For example, both Chambal as well as Son are a part of the Gangetic system. Chambal is a tributary. You can see over here, this is the Chambal river. It enters into the Yamuna river, which finally enters into the Ganga river at Prayagraj. The Son river, you can see over here, Son river, it is directly entering into the Ganga river. Fine. So these are our northward flowing rivers. Then we have certain rivers which are eastwards flowing. The eastward flowing rivers or the southeast flowing rivers include major rivers of the peninsular India. So we have, starting from here, we have the Rupnarayan, Subarnarekha, Baitarni, Brahmani, we have Mahanadi, Godavari, Krishna, Paleru, Penneru, Palar, Kaveri, Vaigai. These are some of the important rivers that are moving towards the southeast side or the eastward side and entering into Bay of Bengal. Fine. Then we have third category of peninsular rivers which are moving westward. And they are entering into the Arabian Sea. So let's start with them. We have Sabarmati, Mahi, Narmada, Tapi, then many small rivers of this location, of the Western Ghats region. So these are all westward flowing rivers. Fine. Now, what determines or what defines which river will move where? Before that, there is another category of rivers in India known as the inland drainage systems. Those rivers which are not entering any sea or any bay or any lake,
but just they are flowing for a length and then they just cease to exist. Okay, so in that category, we have this Ghaggar river. Now, Ghaggar river is considered to be the remnant of the mighty Saraswati river, along the shores of which survived the Indus Saraswati civilization. Harappa Mohenjo-daro padha hoga. So it existed at the banks of the Saraswati river. Now, Saraswati river, it experienced a lot of, ये बिल्कुल सूख गई because of change in the climatic patterns on the earth, and also because the Yamuna river, which was a headward tributary of this river system, it got pirated or it got captured by the Ganga system, right? Apart from that, we have the Luni river. We have the Luni river which enters into the Rann of Kutch region. This bluish region here, this is the Rann of Kutch region. So Luni river also does not enter into any ocean. It also just enters into the Rann of Kutch and then that's it. It gets lost over there and end of it. End of the Luni river. So the Ghaggar system and the Luni system. These are two important inland drainage systems of the country. Fine. Now इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं, बहुत सारी रिवर्स हैं. ये डिवाइडेड है इनटू मेजर एंड माइनर ड्रेनेज एरियाज. एंड इनका जो डिवीजन है, द मेजर डिवीजन दैट हैज बीन क्रिएटेड, जो डिवाइड करता है ड्रेनेज को, उसको हम क्या कहते हैं? वाटर डिवाइड. सो द वाटर डिवाइड और द ड्रेनेज डिवाइड ऑफ इंडिया, इट इज ओवर हियर. यहां से स्टार्ट होता है दिल्ली रिज, the Aravalis, then it goes here, we have the Vindhyas, we have the Satpuras, and then here we have the Western Ghats. So this is the drainage divide of India. Any river that flows to this side of the drainage divide will end into the Arabian Sea, and any river that flows to the eastward side of the drainage divide will end into Bay of Bengal system. Now, यहाँ पे I have provided the same map in the previous slide in a bigger format over here. Okay, so you can use this map with a better clarity for your study purposes. But let me teach from this map itself. Okay, so we have in the northern hemisphere, in the northern side of India, in the Himalayan region, first we have the Indus system. Now, the Indus system, the important tributaries of Indus system include, we have the important right hand tributary known as the Shyok river. Nubra river, which is fed by the Siachen glacier as well. Nubra river is a tributary of Shyok. So, Shyok river is one of the most important right bank tributaries of Indus river. After that, there are 5 very important left bank tributaries of Indus. We have the Chenab, Jhelum, which makes up a border between India and Pakistan. It moves through the Vular Lake and it experiences some amount of meandering. The only Himalayan river that experiences meandering. We have Chenab, Ravi, Beas and Satluj. Jhelum and Ravi enter the Chenab rivers. Beas enters into Satluj. Within India itself, Beas enters into Satluj. Jhelum and Ravi join the Chenab river in Pakistan. Later on, the Chenab then enters into the Satluj river and makes the Panjnad river, which finally enters into Indus. So these are the important tributaries of Indus system. One by one, सारे जो river systems हैं, उनके मैं tributaries आपको दिखाऊंगी in smaller maps that are available in the PPT itself. So Indus system देख लिया. Next we have the Ganga system. Now Ganga river, it starts at Gangotri glacier. Bhagirathi starts at Gangotri, and Alaknanda, it starts at Satopant. Satopant and Gangotri are the source glaciers of the Ganga river. Now, as Ganga river, it moves from here. It finally enters into, it gets divided around here, it gets divided into 2 parts, and we get an important distributary of the Ganga river, that is the Hooghly river. So, this is Hooghly river.
And after that, once Ganga river enters into Bangladesh, its name changes, and from Ganga it is now known as the Padma river. Now Ganga has very important north and the south bank, or the left and the right bank tributaries. So if the river is moving like this, if the river is moving in this direction, this will be its left hand, this will be its right hand. कभी कंफ्यूजन हो कि लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी क्या है, तो गंगा को देखो, गंगा इस साइड मूव कर रही है, टुवर्ड्स ईस्ट मूव कर रही है, तो यहां से जो भी साउथ से उसकी ट्रिब्यूटरीज आएंगी वो उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी, जो लेफ्ट से ट्रिब्यूटरीज आएंगी वो उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो इधर से नॉर्थ से ट्रिब्यूटरीज आएंगी वो उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज रहेंगी. ठीक, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज. राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी Yamuna river. Yamuna river, which starts at the Yamunotri. It starts at Yamunotri and joins Ganga at a place known as Prayagraj, जहां पे अभी कुंभ चल रहा है. ठीक है, that is where it joins the Ganga river. Now Yamuna की भी tributaries है, important tributaries. We have Chambal river. The most important tributary of Yamuna river is the Chambal. Within Chambal, we have the Kali, Sindh, we have Parbati, we have Banas, and these other rivers. Then idhar, apart from Chambal, we have Sindh river, we have Ken and Betwa. Ken Betwa canal बहुत सुना होगा. So Ken and Betwa rivers are both belonging to, they are both originating from the peninsular region and entering into the Ganga system. देन यहाँ पे वी हैव, इसके आगे, अब यहाँ पे इलाहाबाद है, यहाँ पे गंगा को ज्वाइन कर लिया यमुना ने. सो इसके आगे कोई भी अगर पेनिनसुलर रिवर आ रही है वो डायरेक्टली गंगा को ज्वाइन करेगी. सो टॉन्स और सोन, सिमिलर साउंडिंग नेम, सोन, टॉन्स, दोनों ही गंगा की डायरेक्ट ट्रिब्यूटरीज हैं. फाइन. यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट बैंक है वहां पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स, जो मोस्ट ऑफ दीज रिवर्स आर एंटीसीडेंट रिवर्स. ये रिवर्स ज्वाइन कर रही हैं गंगा को. गंगा बाय इटसेल्फ इज अ कॉन्सिक्वेंट रिवर, बट उसमें बहुत सारी एंटीसीडेंट रिवर, जैसे घाघरा हो गया, कोसी हो गई, ये एंटीसीडेंट रिवर्स हैं जो हिमालय बना था उसके पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो आके गंगा को फिर ज्वाइन करती है. ठीक, सो इधर से स्टार्ट करें. वी हैव राम गंगा, वी हैव गोमती, वी हैव घाघरा, वी हैव गंडक, घाघरा नहीं ये गंडक, वी हैव कोसी. दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा. अब इसको याद अगर करना है ट्रिब्यूटरीज, तो यहाँ पे सबके निमोनिक दिए हुए हैं. ऑल द निमोनिक्स हैव बीन प्रोवाइडेड. जो गंगा रिवर है, इट स्टार्ट्स एट गंगोत्री एंड सतुपथ ग्लेशियर. इंडस स्टार्ट्स इन द टिबेटन प्लेट्यू रीजन नियर लेक मानसरोवर. ठीक है, कैलाश रेंज जो है वहां से इंडस रिवर जो है हमारी स्टार्ट होती है. देन इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट, रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा. कैसे याद करोगे? निमोनिक सबके लिए दिया हुआ है, सबकी ट्रिब्यूटरीज मेंशन की हुई हैं, सबके निमोनिक्स दिए हुए हैं. आई एम नॉट नरेटिंग दैट आउट बिकॉज आई डोंट वांट टू जस्ट रीड आउट फ्रॉम द पीपीटी, सो आई वोंट बी नरेटिंग इट आउट, जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि ये निमोनिक है, ऐसे याद कर लो. इंडस की जो रिवर्स है उनको याद करने के लिए दिस इज द फॉर्मूला. IJK, क वाला साउंड, जो सी साउंड सी होता है वो क वाला साउंड भी बनाता है कभी कभी. सो IJK, दैट मीन्स इंडस, झेलम, चेनाब. देन RBS, रावी, ब्यास, सतलुज, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, RBS. वैसे ही IJK, RBS, इससे जो इंडस की जो हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उनका आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कौन सी पहले आती है, कौन सी बाद में आती है. In 2024, UPSC did ask a question on sequence of the tributaries for Ganga. तो जिनने भी ये पढ़ा था, मैंने क्लास में ये पढ़ाया था बच्चों को प्रीलिम्स वाले बैच में, तो जिनने भी ये पढ़ा था उनका आंसर सही हो गया. ठीक, चल. सो यहाँ पे सारी रिवर्स का दिया हुआ है. सो आई वोंट बी रीडिंग इट आउट, आई विल जस्ट शो यू द वेरियस डिफरेंट इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया.
Then we have the Brahmaputra river. Now Brahmaputra river, before entering India, it is known as Yarlang Sangpo. Then it enters into India from Namcha Barwa और the Yonggyak पास. हमने पढ़ा था, पासेस वाला चैप्टर देख लिया होगा. योंगयाक पास से ये इंडिया में एंटर करती है. वंस इट एंटर्स इनटू इंडिया, अभी ये ब्रह्मपुत्रा नहीं कहलाएगी. राइट नाउ इट विल बी कॉल्ड एज द दिहांग रिवर और द सियांग रिवर. देन दिहांग सियांग रिवर में एंटर होते हैं द वाटर्स ऑफ द दिबांग plus the waters of the Lohit river. That is when you get your Brahmaputra river. Now Brahmaputra river, it flows through the state of Assam and then it enters into Bangladesh. As it enters into Bangladesh, it meets the Teesta river and वहां पे इसका नाम चेंज हो जाता है to Jamuna. Then the Jamuna river, it enters or it meets the water of the Meghna river. मेघना रिवर क्या है? बराक रिवर. अभी मैं मैप पे आपको दिखा दूंगी. मेघना रिवर इज बराक रिवर इन इंडिया एंड मेघना इन बांग्लादेश. सो जमुना रिवर एंड पद्मा रिवर दे मीट. जमुना एंटर्स इनटू पद्मा, देन पद्मा एंटर्स इनटू मेघना एंड इट इज दिस सिस्टम दैट देन एंटर्स इनटू द बे ऑफ बंगाल. ठीक है, सो ये जमुना बनती है, देन इट एंटर्स इनटू पद्मा. इसका पानी जमुना पद्मा में जाती है, पद्मा फिर एंटर करती है मेघना में एंड दिस एंटर्स इनटू बे ऑफ बंगाल. मेघना रिवर क्विकली हम देख लेते हैं बिफोर वी स्टार्ट विद ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. दिस इज द बराक रिवर. दिस इज द बराक रिवर. ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की रिवर है, द बराक रिवर. दिस बराक रिवर, when it enters into Bangladesh, it is then known as the Meghna river. and यहाँ पे अगर आप देखो, ये है आपकी मेघना रिवर. इसमें पद्मा और जमुना का पानी मिलके it is entering into Bay of Bengal and creating the Sundarbans. Fine. Now जो गंगा है, a part of Ganga, that is the Hooghly river, a distributary of Ganga, it is within India. Rest of the Ganga, it is entering as Padma into Bangladesh. ठीक है, सो ये जो हुगली रिवर है, ये भी जो डेल्टा बना रही है, पूरा रीजन इज नोन एज द सुंदरबंस. सो द सुंदरबंस आर नॉट जस्ट इन बांग्लादेश, दे आर इन इंडिया एज वेल. फाइन. सो दिस इज नोन एज सुंदरबंस. ब्रह्मपुत्रा, मेघना और गंगा के कन्फ्लुएंस की वजह से बन रहा है सुंदरबंस. So let's talk about the important tributaries of Brahmaputra river. We have, of course, Dibang and Lohit are head streams of Brahmaputra. Siang is the original, Sangpo that is entering into India, जिसमें Dibang और Lohit का पानी मिलके we are getting the Brahmaputra river. Then there are certain right bank. This is the right bank. This is the left bank because it is flowing in east to west direction. So north side right bank, left side left bank, the south side left bank. So here we have the Budhi Dihing, we have Dikhu, Dhansiri, we have Kopali, Polong. ये सारे जो tributaries हैं, these are the left bank tributaries. And right bank tributaries में we have very important Subanasiri river. Now वो जगह जहाँ पे Subansiri river enter करती है into Brahmaputra. Subansiri river itself brings about a large amount of sediments. ब्रह्मपुत्रा खुद भी sediments लेके आ रही है. ये सारे sediments रिवर के बीच में एक आइलैंड या एक पॉइंट बार, जिसको चार भी कहते हैं, वो बना देता है. The biggest riverine island in the region is the Majuli Island, which has been declared as a district in the state of Assam. And this Majuli Island is not just the biggest island in this region, it is the biggest island, riverine island in India, and it is the biggest riverine island in the entire world. पूरी दुनिया का सबसे बड़ा riverine island known as the Majuli Island, it is located at the confluence region of Subansiri and Brahmaputra. पास में ही दीखू रिवर भी आती है. ठीक.
Then apart from Subansiri, we have Bhavani, we have Barnad, we have Manas, we have Sankosh, we have Tamang. ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं. ठीक, चलो ये हो गई हमारी 3 हिमालयन रिवर्स. नेक्स्ट लेट्स मूव टू द पेनिनसुलर रिवर्स. पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी. First, let's talk about Mahanadi. Now, Mahanadi River is known for its rectangular drainage pattern, right? It's known for its rectangular drainage pattern. It moves almost at right angles. Almost right angles पे move कर करके it is making it is moving around in the region. यहाँ पे the Mahanadi River, it divides into small distributaries and makes the Mahanadi Delta. Fine, this is the Mahanadi Delta. So Mahanadi River, it starts in the state of Chhattisgarh and then it enters into Odisha. Odisha की सबसे important river है. इसकी tributaries include, यहाँ पे देखो tributaries भी almost right angle पे join कर रही हैं इसको. The tributaries include Hasdo, Mand, Ib. We have Shivnath. So ये सारी क्या है? Right bank tributaries. Shivnath, Hasdo, Mand and Ib. And left bank tributaries include Ong and Tel. बहुत complicated नाम नहीं है, छोटे छोटे नाम है महानदी के. Ong, Tel and Shivnath, Hasdo, Mand and Ib. Fine. So these are the important tributaries of Mahanadi river system. इसके बाद महानदी के बाद we come to the Godavari river. Now in case of Godavari river is also making at the end, it is also making an important delta region. गोदावरी और कृष्णा रिवर्स बहुत पास में है इनके माउथ्स. सो गोदावरी कृष्णा डेल्टा इज ऑलमोस्ट अ कंटिन्यूअस डेल्टाइक रीजन. फाइन. सो दिस इज योर गोदावरी रिवर, ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा. ठीक है, और द बूढ़ी गंगा. So this is Godavari river. It starts in the state of Maharashtra and ये end होती है in the state of Arunachal Pradesh. Now this river, it also has multiple left and the right bank tributaries. These are the left bank tributaries. ये आपकी गोदावरी river है. These are left bank. These are the right bank tributaries. Right bank में दो ही major tributaries हैं. We have the Pravara and the Manjra. Left bank में multiple tributaries हैं. ठीक. We have the Shivana here. Then this is Purna. Then we have Penganga and Vainganga which meet up to form Pranhita. So Vainganga, Penganga are not directly entering into Godavari river. They are coming together. They are making Vainganga and Penganga. They are making Pranhita which then enters into Godavari. वर्धा रिवर, जहां पे वर्धा आश्रम गांधी जी ने बनाया था, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ पेनगंगा. सो पेनगंगा, वेनगंगा मीट अप फ्रॉम प्राणहिता विच देन एंटर्स इनटू द गोदावरी रिवर. देन वी हैव द इंद्रावती एंड द सबारी. ठीक है. सो राइट बैंक इसके क्या हो गए? वी हैव प्रवारा एंड मंजरा. एंड लेफ्ट बैंक इसका starting from here to there, we have Shivana, Purna, then Vainganga, Penganga, Vardha not directly entering. So after Purna, we have Pranhita. Then Indravati, and finally Sabari. So these are the important tributaries of Godavari river. ठीक. Godavari के बाद we'll come to the Krishna river. Now the Krishna river, it is here, the second most important river of peninsular India. So Krishna river KG delta बनाता है और Bay of Bengal में ये भी जाता है. ठीक. Krishna river also starts from Maharashtra.
So this is your Krishna river. इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी यहाँ पे है भीमा रिवर, और भी ट्रिब्यूटरीज के नाम टेबल में है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर इज द भीमा रिवर। ठीक, अभी जब हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स पढ़ेंगे और जब हम ये पढ़ेंगे वाटरफॉल्स, तो और ट्रिब्यूटरीज के नाम आप लोग को आइडिया लग जाएगा। अभी के लिए मेन समझो, यहाँ पे भीमा रिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, एंड साउथ में द भद्रा रिवर एंड तुंगा रिवर, दे कम टुगेदर टू मेक द तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, तुंगभद्रा पे भी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं। Tungabhadra multi-purpose project exists for drainage and drinking purposes. Fine. So this is your Krishna river. Then the Kaveri river. Kaveri river बहुत controversy में रही है in the past few years because of distribution of water of Kaveri between the states of Karnataka as well as Tamil Nadu. So this is the Kaveri river. Kaveri river जो है ये start होती है in the place known as Kurg और Kodagu. Then it moves into Tamil Nadu and then it finally makes a delta, Kaveri delta, and enters into the Bay of Bengal. इसकी tributaries right bank and the left bank. Left bank में एक important tributary है known as the Shimsa and Arkavati. In the right bank tributaries we have the Lakshman Tirtha, Harangi, Hemavati, Kabani. We have Suvarnavati. We have Bhavani, Noyal, and Amravati. Now, Amravati as a city which was to be made the capital of Andhra Pradesh. But Amravati river, it does not lie in Andhra Pradesh. It is a river of Kaveri system in Tamil Nadu. So confuse मत होना, अमरावती रिवर अगर पूछे वो आंध्र प्रदेश में नहीं है, it is in Tamil Nadu. Fine. So these are the important tributaries of Kaveri. Then comes Narmada. This is Narmada. यहाँ पे लिखा हुआ है Narmada river, the biggest west flowing river of the country. Narmada river. It flows through a rift valley that exists between the Vindhyas and the Satpuras. ना क्योंकि ये रिफ्ट वैली में जा रही है, अब देखो इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है बहुत ज्यादा फैला नहीं हुआ है. Northwest extension of the drainage system is very limited because on the north it is bound by the Vindhyas and on the south it is bound by the Satpuras. That's why Narmada does not have a very big north-south expanse. It just flows east-west. East इधर से आके अमरकंटक प्लेट्यू में स्टार्ट होके it enters into the Gulf of Khambat region. इसकी जो tributaries हैं, the same reason is why the tributaries of Narmada are very tiny small tributaries. Important tributaries अगर हम देखें, important tributaries we have the Chota Tawa, which makes the Tawa reservoir. We have here Kundi, we have Hatni, Hiran, Sher. तीन तो जानवर ही हो गए, शेर, हिरण, हथनी. Fine. These are some of the important tributaries. सारी नहीं रटनी. These are some of the important tributaries of the Narmada river system. Then another twin of Narmada is the Tapi river. It also flows between Satpura range and Ajanta and Satmala ranges on the south. ठीक? So this is also constricted. North-south expanse इसका भी बहुत ज़्यादा constricted रहता है. Tapi river, it starts in Madhya Pradesh in a place known as Multai, Betul district में, and then it also enters into the Arabian Sea region, Gulf of Khambat, Arabian Sea region. इसकी important tributaries, इसकी tributaries थोड़ी सी बड़ी हैं compared to Narmada. We have Purna, Girna, Panjara. These are the important tributaries of the Tapi river system. Then an important river system, that is Luni river. Now Luni river is the longest river of Rajasthan. But Luni is a seasonal river. उसमें throughout the year पानी नहीं रहता है. ठीक है? Luni river, it starts in the Aravallis.
It starts in the Aravallis and it enters into the Run of Kutch region. And Run of Kutch region में इसमें कुछ भी मतलब it does not enter into any ocean or lake. It has a drainage, inland drainage. Within land, over land, it just, ceases to exist. It just ceases to exist in Run of Kutch region. It is the biggest river system of Rajasthan, and world ka one of the biggest inland drainage system is made by the Luni river. Right? So these are the important river systems. अब यहाँ पे क्विकली टेक अ लुक एट द मेजर ड्रेनेज बेसिन्स. किस रीजन से कौन से रिवर का ड्रेनेज जाएगा. ठीक है, मेजर ड्रेनेज बेसिन्स इंडिया के ये हैं. मैंने आपको दिखाया था बना के द लाइन डिवाइडिंग ईस्ट and the west drainage, the rivers going into Western Ghats, rivers going into Bay of Bengal and Arabian Sea, right? So this is the drainage divide of India, fine? Starting from here, यहाँ पे parts of Shivalik, then the Delhi Ridge, then we have Aravallis, we have Vindhyas, Satpuras and the Western Ghats, fine? Here we have the Indus Basin. Indus Basin is very limited within India. यहाँ पे कुछ rivers हैं. यहाँ पे मैंने बताया था there was one river, a glacier से associated river which was entering into the Tarim Basin. Let me know in the comments which river it was. Okay, so यहाँ की जो rivers हैं, यहाँ से जो भी drainage excess water रहेगा that will drain away in the Chinese region. यहाँ पे जितना भी पानी एक्सेस पानी रहेगा दैट विल गो इनटू द इंडस रिवर फाइनली. ड्रेनेज बेसिन का मतलब फाइनल जो रिवर है, फाइनल जो चैनल है, क्या रहेगा फॉर द वाटर दैट इज फ्लोइंग, एक्सेस वाटर इन दैट रीजन. यहाँ का जितना गंगा जो बेसिन है इंडिया का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है. यहाँ का जितना भी पानी है, इतने पूरे रीजन का जितना भी पानी है वो फाइनली गंगा के थ्रू बे ऑफ बंगाल में घुसेगा. एंड हियर वी हैव द ब्रह्मपुत्र बेसिन. साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र इज द बराक रिवर बेसिन. दिस इज बराक रिवर बेसिन, जिसको हम मेघना रिवर कहते हैं बांग्लादेश. एंड यहाँ पे जो भी रिवर्स फ्लो करेंगी दे विल एंटर इनटू म्यांमार वाला रीजन. दे विल एंटर इनटू म्यांमार. Then over here, this is Mahi River. Abhi I'll show you the Mahi River. This is Sabarmati River Basin. Then this is Narmada, Tapi, Godavari, Krishna, Kaveri, Pennar. This is the system for Vaigai. यहाँ पे छोटा सा नागवली, छोटा सा शारदा, महानदी. This is Brahmani. To the south of Brahmani river start the eastern Ghats, and this is Subarnarekha. What about this region? This region, it has, यहाँ पे तो Periyar है, almost entire Kerala, and this region, it has very short rivers with separate river basins, where separate minor river basins associated with each river. Okay, we have Mandavi, Zuari, we have Mithi river, we have Saravati river, we have Netravati river. So many different short rivers that are present in the Western Ghats region. Fine. These are the important river basins or the major drainage basins of the country. ठीक, अब मेजर रिवर्स तो देख ली, कुछ और रिवर्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं मैप में. दिस इज द माही रिवर. नाउ माही रिवर यहां से गुजरता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. जो माही रिवर है द ओनली रिवर इन इंडिया विच कट्स थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार ये कट करती है. इधर यू हैव द साबरमती रिवर एंड माही रिवर. यहाँ पे शॉर्ट कुछ रिवर्स एग्जिस्ट करती हैं जिनको मैं ऑलरेडी आई हैव जस्ट पॉइंटेड देम आउट. ठीक है, सो दीज आर द मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया. इनको याद करने के लिए द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड वेयर दे आर ओरिजिनेटिंग, दैट इंफॉर्मेशन इज हियर, एंड द प्लेसेस और
origin यहाँ पे भी है, and the tributaries associated them are here, plus the mnemonics are also provided to all of you. ठीक है, so these are the rivers of India, important rivers, important river basins of the country. Next, let's talk about the waterfalls of India. Now, this map over here shows the important waterfalls associated with India. After this, I have provided you guys with a list where I have provided you state wise कि कहाँ पे कौन सा waterfall है किस state में, उसकी height क्या है और उसकी river कौन सी है. ठीक है, तो यहां से भी जो रिवर्स है ना, रिवर्स का और बेटर आइडिया यहां से, प्लस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स पे अभी एक वीडियो आएगा लेक्स एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स पे, उससे और आपका रिवाइज होगा ड्रेनेज सिस्टम. ठीक है, क्योंकि एक साथ बहुत सारी रिवर्स पढ़ोगे तो याद तो होगा नहीं, यहाँ पे धीरे धीरे पढ़ोगे. अच्छा, ये हसदेव पे है, हसदेव एक ट्रिब्यूटरी है महानदी की. याद करो, महानदी जब मैंने पढ़ा था ऊपर से आके, नॉर्थ से आके महानदी में हसदेव एंटर कर रही थी, राइट. So we will study state-wise the different waterfalls and the associated river. Now this information is not very important. Height information isn't very important. What is important is where the waterfall is and what is the river which is making that waterfall. Now Indian Peninsula, when the rivers they exit the Indian Peninsular region, they make waterfalls. जो हमारा प्लेट्यू रीजन है, पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन, वहां से जब रिवर्स एंटर करते हैं ईदर इनटू द नॉर्दर्न प्लेन्स और दे एंटर इनटू द कोस्टल प्लेन्स, दे मेक अ waterfall. Okay, so that's why waterfalls are a very common feature with regards to Indian rivers. One by one, let's take a look at these waterfalls. छत्तीसगढ़ से स्टार्ट करते हैं. छत्तीसगढ़ में 3 इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं. वन इज द अमृत धारा वाटरफॉल. अमृत धारा वाटरफॉल, it is located on the Hasdev river. Hasdev river, that is a tributary of the Mahanadi river. Next we have the Tirthagar waterfall. Tirthagar waterfall is on the Munga river. Now Munga river is a tributary of the Kanger river. And Kanger river is associated with a national park known as Kanger National Park, located in southern parts of Chhattisgarh. So this is Kanger river's tributary, Munga river, which is making the Tirthagar waterfall. After that, Kanger river eventually joins into Mahanadi. Okay. Then we have Chitrakoti falls, which are made by Indravati. You remember that river which was entering into tributary from the opposite, into Godavari from the opposite direction? Before Sabari, after Pranahita, this was Pranahita, this was Sabari. Between Sabari and Pranahita, there was a river that was entering into Godavari from an opposite direction. Godavari flows from west to east. Indravati entered into Godavari from east to west. So this is the river that is making the Chitrakoti falls. So it is a tributary of Godavari river. Next, Chhattisgarh का पुराना भाई, द पार्ट मध्य प्रदेश का ही पार्ट था छत्तीसगढ़ बिफोर 2000. सो मध्य प्रदेश के फॉल्स हम देखते हैं. फर्स्ट वी हैव द धुआंधार फॉल्स. नाउ धुआंधार फॉल्स, दे आर इन अ प्लेस नोन एज जबलपुर. They are known for its metamorphic formations, for its metamorphic marble rocks. ठीक है, धुआंधार फॉल्स के फॉल्स यहाँ पे फॉल कर रहा है, नर्मदा रिवर इट इज फॉलिंग, एंड यहाँ पे there is presence of marble. Very good quality marble is present at the marble rocks or the Dhuandhar fall region. So this is made by the Narmada river. So Narmada independent का मतलब कि Narmada is not joining any other river. It is the final channel. The final channel. Then we have the Chachai falls. Chachai falls are made by the Bihad river. The Bihad river, it is a tributary of Tons river. टॉन्स रिवर हमने देखा था. टॉन्स रिवर सोन के जस्ट पहले टॉन was entering into Ganga. So टॉन्स रिवर की ट्रिब्यूटरी है बीहड़ रिवर and टॉन्स is a tributary of Ganga. These falls, the Chachai falls, they are made by the Bihad river. Then we have the Kapil Dhara falls.
named after Kapil Muni, and these Kapildhara falls, they are made by Narmada once again. After that, we have Rajab Pratap or the Silver Falls. Now, Silver Falls, they are present in the only hill station of Madhya Pradesh, that is Pachmadi. So, ये बहुत height से पानी गिरता है and it looks very shimmery, silverish. That's why it's known as Silver Falls. It is not associated with any particular named river as such. ठीक है, पानी बस हाइट से नीचे गिर रहा है, कोई एक पर्टिकुलर रिवर से ये एसोसिएटेड नहीं है. देन आफ्टर दैट वी हैव द सोनेमुड़ा फॉल्स. नाउ सोनेमुड़ा फॉल्स, दे आर प्रेजेंट ऑन द सोन रिवर. यहां से सोन रिवर शुरू होती है. अलकनंदा में है सोनमुड़ा फॉल्स, सॉरी नॉट अलकनंदा, अमरकंटक में है सोनमुड़ा फॉल्स, एंड यहां से हमारी सोन रिवर विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा दैट इज स्टार्टिंग. Okay, so these are the waterfalls of Chhattisgarh and MP. Next we have Jharkhand. Jharkhand में भी plateau region है. Plateau region से fall करती हैं rivers then into the plain region. So Jharkhand में important falls are Panchghag, Lodh and the Hundru fall. Hundru fall भी question में था धुआंधार के अलावा. Now Panchghag falls, they are made by the Banai river, which is a tributary of Subarnarekha. Then the Lodh falls, they are made by Budha river. Now Budha river is a tributary of North Koyal river, which further joins the Son river. ठीक है, यहाँ पे add कर लेना, it further joins the Son river. Then we have the Hundru falls, Subarnarekha river. Subarnarekha means Swarnarekha, gold line. Okay, so Subarnarekha falls, they are associated with small amount of gold placer deposits. That's why it's known as Subarnarekha river. Subarnarekha river makes the Hundru falls in the state of Jharkhand. Then in Odisha again, we have Barehi Pani fall. Barehi Pani fall is again a tributary of Subarnarekha known as Buda Balanga. Okay, that is making the Barehi Pani falls. Then we have the Kandadhar falls. Kandadhar falls are made by Kora Pani Nala, which is a tributary of the Brahmani river. Okay, we had Subarnarekha and Brahmani, two minor rivers, before Mahanadi, the major river, starts. To the north of Mahanadi, to the south of Brahmani starts the Eastern Ghats, right? Then we have Koili Ghugar falls. The Koili Ghugar falls are made by the Ahiraz river, which is a tributary of Mahanadi, right? So these are the important ones in Odisha. Next, Karnataka. Now Karnataka has a very big plateau region, Karnataka plateau region. That's why Karnataka, and also there is Western Ghats. Western Ghats से भी जो बहुत सारी rivers छोटी छोटी जाती हैं, ये भी they also fall from a quite a height. So Karnataka के falls की अगर हम बात करें, the tallest waterfall of India, known as the Kunchikal Falls. Height is 455 meter. These are the tallest waterfall of India. They are made by the Varahi river. The Varahi river is a tributary of Krishna river. Then we have the Barkana fall. Barkana fall are made by the Sita river, which again is a tributary of Krishna river. We have the Jog fall, the most famous fall, and many people confuse Jog fall being the tallest waterfall in India. That is not true. You can see that the tallest waterfall is Kuchikal fall. And Kunchikal fall is 455 meter tall. 455 meter की height से पानी नीचे गिर रहा है. Whereas Jog fall is only 253. Jog fall is made by the Saravati river. Saravati river is a minor river that starts from the Western Ghats and enters into Arabian Sea. So there are multiple minor rivers over there. One of them is the Saravati river. Then we have the Magod falls, another independent river known as the Bedati river. Shimsa falls. Shimsa falls, another very famous falls, and they are made by the Shimsa river. Now Shimsa river is a tributary of the Kaveri river. Then Shiva Samudra falls. Very famous tourist destination in Karnataka, the Shiva Samudram falls.
they are very nearby from Bangalore as well. They are made by the Kaveri river. One of the most prominent waterfalls associated with Kaveri is the Shivasamudra Fall. After that we have Hebbe Fall. अगर आप बैंगलोर रीजन में रहते हो तो ये शिमसा, शिवसमुद्रा और हेब्बे काफी कुछ पता होगा, गए हुए होगे, आसपास ही है. This is made by the Tunga river, which is a tributary of Krishna river. Okay, so these are the waterfalls of Karnataka. Then we have Maharashtra. Maharashtra में first we have the Thoseghar waterfall, which is basically a cataract. So waterfall क्या होता है? Single time water falls from a height. In case of cataract क्या होता है? The ground is something like this. So multiple times the water is falling. So this Thoseghar is basically a cataract. The river associated with it, I was unable to find the information. Many sources said it is the Thoseghar river itself, but many sources were, combining it with some other rivers of the Krishna river system. So as of now, what we know is that there is an unnamed river system that is creating the Thoseghar falls. Then we have the Gangapur falls made by Godavari, not a very big fall, a very 50-meter tall only. And the Someshwar fall again by the Godavari river. Okay? Then we have Kerala. Kerala may be waterfalls. We have waterfalls by Chalakodi river, which is a tributary of Periyar. This is known as Athirapilli waterfall. Next, we have Suchipara waterfall made by the Chalyar river, which is a small river, again enters into Arabian Sea, starts from Western Ghats. And the Meen Mutti falls made by the Kalar river, which is a tributary of Near river. Near river again, very small river, starting from Western Ghats, ending into Arabian Sea. Then some other waterfalls. We have the Nosgithyang waterfall. It is in the state of Meghalaya. In the state of Meghalaya, you all know that there are regions. Cherrapunji is a place where there is a lot of rainfall. Mausimram and Cherrapunji, some of the highest rainfall receiving regions of the world. So यहाँ पे चेरापूंजी में जब भी बारिश होती है, क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश होती है, वहां पे एक वाटरफॉल क्रिएट हो जाता है नोन एज नौसिंगथियांग वाटरफॉल. ठीक है, इट इज इन मेघालय. इट इज कंप्लीटली रेन फेड, नॉट एसोसिएटेड विथ एनी रिवर. Then we have in the state of Mizoram, we have Vantong Falls. Vantong Falls are made by a tributary of the Barak River, a second degree tributary of Barak River. It is known as River Lau, which joins River Tlewang, which eventually joins the Barak River. Then we have the Kempty Falls. Now Kempty Falls, they are in Uttarakhand, made by the Yamuna River, and Kempty Falls are very near to the place where you will go after getting selected, that is Libsna in Mussoorie. Okay? Then Dudhsagar Fall. Dudhsagar Fall, कभी गोवा गए हो तो गोवा के पास बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट लोकेशन है दूधसागर फॉल्स. इट इज नोन एज दूधसागर because the water that falls from such a height it is so clear that it looks like it's milk that is falling. It falls with a very high force, so it seems like it is actually milk that is falling from such a height. So that's why it's known as Dudhsagar. Height quite high, 320 meter. Mandavi and Zuari are two important rivers of Goa. These are very short rivers. They start in Western Ghat and enter into Arabian Sea. So these rivers, when they enter from the Western Ghats and into the plain regions, they also make waterfalls. So Dudhsagar waterfall is one of the most important waterfalls in the Western Ghats region, made by the Mandavi river. And then we have the Thalayar falls. They are located in Tamil Nadu. यहाँ पे add कर लेना. Located in Tamil Nadu. Made by a river known as Manjalar river, which is a tributary of the Vaigai river. Now so much facts, so many facts, how to remember that? Facts हैं, कई बार you have to take the difficult route.
एंड उनको याद करना ही पड़ता है. ओके, टिप्स एंड ट्रिक्स कितना ही यूज कर पाओगे, राइट? सो फॉर दिस द बेस्ट सोल्यूशन इज एक बड़ा सा चार्ट पेपर लेके उस पर रेड इंक से, रेड कलर सबसे कम डिफ्यूज होता है, सो सबसे ज्यादा रेड कलर अट्रैक्ट करता है हमारी आंखों को. दैट्स व्हाई डेंजर साइंस आर ऑलवेज रेड इन कलर. सो क्या करना है आपको, एक चार्ट पेपर लेके रेड कलर से एक हफ्ते तक जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है मैपिंग रिलेटेड, एक हफ्ते के लिए एक चार्ट पेपर लगा दिया जिसपे वाटरफॉल्स है, एक हफ्ते के लिए एक चार्ट पेपर लगा दिया जिसपे कुछ और इंफॉर्मेशन है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व से. बार बार उन पे नजरें जाएंगी, चीजें याद होने लगेगी, जस्ट लाइक द लिरिक्स ऑफ योर सॉन्ग्स, चीजें याद होती रहेंगी. ठीक है, एक हफ्ता लगे 10 दिन लगे, उसको चिपका के रखना अपने रूम में. जब एक बार वो चीजें रिटेन होने लगे, उस चार्ट पेपर को सम्मान सहित निकाल देना, दूसरा लगा देना, और रूम अगर बड़ा है तो मल्टीपल लगा के रख. ओके, सो दैट इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मैपिंग, क्योंकि बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कुछ चीजों के तो निमोनिक्स बन जाते हैं, बट ऐसे छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं उनको निमोनिक्स बना के भी मैं नहीं समझा सकती. जहां निमोनिक्स बन सकते हैं वहां मैंने वर्ल्ड मैपिंग में भी प्रोवाइड किया है या रिवर्स के लिए भी प्रोवाइड किया है, बट दीज आर द फैक्ट्स दैट यू विल नीड टू स्टडी. ऑल वी कुड डू was compile the facts in a single location. वो हमने हमारी ड्यूटी कर दी, अब आपकी ड्यूटी ये है कि इनको याद कर लो. ठीक है, these are the common facts जो सबको याद होने चाहिए. तो इन चीजों को याद कर लो, एग्जाम में आएगा टिक करना, फिर हमेशा के लिए भूल जाना. प्री में बस प्री के लिए याद करना है, मेंस में तो ये सब आना है नहीं. ठीक है, चलो. सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो रिलेटेड टू द ड्रेनेज एंड waterfalls. In the next session, we'll study about some more important features, mapping related features of India. So thank you so much and take care.